एसोसिएशन को इसलिए इनवाइट किया गया है कि हर एसोसिएशन के लिए काम करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले हमने वैक्सीनेशन किया था पीवीआर में। पीवीआर के साथ भी हमारे इतने अच्छे रिश्ते हो गए हैं कि आज ये प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं तो पीवीआर हमारे साथ पार्टनर के तौर पर जुड़े हैं। पीवीआर ने हमेशा आकर एक अनजान सा दोस्त जो कभी मिला नहीं था, आज फेडरेशन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो मैं उतना ही आभारी पीवीआर का भी हूँ कि हमें आज फिल्में चल रही, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लगी हुई है, पर उन्होंने टाइम हमको दिया है, हमें सपोर्ट किया है। रैनमोर एक विजन का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। रैनमोर इज ए विजन, और वो विजन हर हिंदुस्तान के टेक्नीशियन में देखना चाहते हैं, हर आर्टिस्ट में देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि वो यहाँ पर आए हैं और आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल क्वेश्चन तो बात की चीज़ें हैं, हम आंसर कुछ भी दे सकते हैं, मगर हम करना क्या चाहते हैं, रैनमोर जो कहते हैं वो करते हैं, और बड़े ही सच्चे क्लियर मन के आदमी हैं। हमने यहाँ पर कोई स्टार नहीं बुलाया है, हमने बुलाया है तो अपने स्टार को बुलाया है, अनूप जलोटा जी को, जो हमारे सिंगर हैं, क्योंकि टेक्नीशियन से बड़ा कोई स्टार नहीं होता है। और हमारे लिए जो हम बैठे हैं, जो आप बैठे हैं, उससे बड़ा स्टार कोई नहीं है। हम ही स्टार क्रिएट करते हैं। यदि हम स्टार क्रिएट करते हैं तो हम क्यों नहीं स्टार हैं? इसमें से हर आदमी हमारे लिए स्टार है और हम चाहते हैं कि वो सुपर स्टार बने। हमारा प्रयास इतना ही है, न हम किसी प्रसिद्धि के लिए, न किसी पब्लिसिटी के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम काम करने के लिए काम कर रहे हैं। और इस काम का रिजल्ट आने वाले दिनों में आप सबको एहसास होगा, जब इसका बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। लाइफ आर्ट फेडरेशन आपके लिए कितना कारगर है, कितना आपके लिए इफेक्टिव है, आपको 2 कदम आगे आना पड़ेगा। हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आपका सपोर्ट कीजिए। हम कई मुकाम पर आप का साथ नहीं पाए थे, पर भविष्य में चाहेंगे कि हम यदि चलते हैं तो आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हमारा चलना सिर्फ आपके लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये तालियां हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर आती हैं। ये जो क्लैप आप बजा रहे हैं, मन से बेमन से, मगर आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। अब से ज्यादा बहुत इमोशनल पल है। हम सारे इकट्ठा है, पूरी फेडरेशन हमारी इकट्ठा है आपके साथ। जो सीट तक नहीं पहुंच पाए यहाँ तक, वो हमारे साथ इधर उधर आजू बाजू बैठे हैं। चारों तरफ से कंप्लीट जो बैक सीट है और जो फ्रंट सीट है वही फेडरेशन है। फेडरेशन सिर्फ यहाँ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मैं जानता हूँ कि अनूप जी का समय बहुत कीमती हमारे लिए है, एक कमिटेड है। इनसे हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं 2 मिनट। पहले मैं मुझे पता है तिवारी जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि दिस इज नथिंग, नॉट ग्लैमरस और सेलिब्रिटी इवेंट, दिस इज फॉर आवर ओन वर्क, हाउ वी ऑल आर गोइंग टू टेक आवर वर्क फर्दर। हम अपने काम को किस तरह से आगे ले जाएंगे लाइफ आर्ट के जरिए। लेकिन लाइफ में जिंदगी है, कहते हैं ना, गालिब साहब कहते हैं, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हैं आप, बोले जिंदगी है तो गम है, गम में मजा है, मजे में दर्द है, और दर्द में हम है, इसलिए हम मजे में हैं। तो वो मजा जब तक दिल से संगीत नहीं निकलता है, द म्यूजिक which comes from the heart and it reaches to the audience, that is with spirituality, with God is amongst us. आदरणीय अनूप जलोटा जी, संगीत एक पहला कदम होता है। किसी को भी हम बचपन से लोरी सुनते आते हैं और कहाँ कहाँ तक संगीत जाता है, लेकिन ये लाइफ आर्ट में संगीत पक्ष का ये एक पूरा एक मैप कैनवस आप
उसके बारे में आप जरा हमारे इस गैदरिंग को बताइए। First of all, hello, check. First of all, I want to thank Mr. Ranmore for coming all the way to India and showing us a new path, a new field to grow further. ये जितने लोग सामने बैठे हैं आप लोग एक्चुअली फिल्म आप लोग बनाते हैं। More than 30 एसोसिएशंस हैं यहाँ, चाहे वो साउंड है, चाहे इफेक्ट है, यहाँ तक कि लुक अलाइक एसोसिएशन के मिस्टर अनिल कपूर भी यहाँ पर हैं। Can you raise your hand? जरा खड़े हो जाइए अनिल कपूर जी। देखिए अनिल कपूर। We have a very famous actor here, Mr. Anil Kapoor. He is look-alike of. So there is an association, look-alike association. So if you want Mr. Amitabh Bachchan, बहुत फेमस है। आप नजर नहीं आ रहे, आइए आगे बैठे। So if you want any look-alike actor actresses, so they have an association, they have all of them. But they don't have a singer like. True. अगर ये कहना पड़े कि उनके भजन गाने तो फिर मुझे बुलाना पड़ता है, तो ये ऐसी लागी लगन आप। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आ जाइए। तो आगे। तो मैंने आपका जिक्र इसीलिए किया कि more than 30 associations today are participating in this meeting. It's such a great thing. तिवारी जी, heads off to you. आप कमाल करते हैं, जीवन दिया इन्होंने, अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया है कलाकारों के हित के लिए। अब अभी तक बात थी सिर्फ म्यूजिशियंस की, क्योंकि इन्होंने म्यूजिशियंस को बहुत सपोर्ट किया। अब बात आ गई है हर एक टेक्नीशियन की। फिल्म में अगर एक घूसा भी मारा जाता है वो तब तक इफेक्टिव नहीं लगता जब तक उसके पीछे आवाज नहीं आए, ढोम। ये कौन देता है? ये देने वाला भी कोई और है, स्टूडियो में बैठ के जो करता है। तो ये सारी चीजें, एक एक चीजें मिला के फिल्म को इफेक्टिव बनाती हैं। उसमें हजारों टुकड़े हैं, कण-कण हैं, जिससे बन के ये फिल्म तैयार होती है। और आप लोग हैं सब जो उसके एक एक हिस्से को मजबूत करते हैं, एक एक हिस्से को इफेक्टिव करते हैं। हमारा म्यूजिक फील्ड भी ऐसा ही है। ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है उसके पीछे कितना काम होता है कि कितने सेकंड का ये सीन है, उसमें इतने सेकंड का ही म्यूजिक आना चाहिए। जहाँ पर उसकी तलवार चलती है वहीं पे वो तलवार की आवाज आनी चाहिए, कहीं इधर उधर आ गई तो बेकार हो गया। ये सारी चीजें करने में आप लोग अपनी फील्ड में माहिर हैं। और अब मिस्टर रनमोर की हेल्प से वी विल ग्रो फर्दर। आप लोगों का यही टैलेंट जो है, अब ये हॉलीवुड जाएगा, ये यूरोप में जाएगा। दिस विल नॉट जस्ट फॉर इंडिया नाउ, बिकॉज यू हैव शोन योर कैपेसिटी। आप लोगों ने ऑस्कर जीत के दिखाया है। हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे म्यूजिशियंस ने, हमारे सिंगर्स ने ऑस्कर जीत के दिखाया। ये दिखाया है कि दुनिया में हम विशेष हैं। हम इतने विशेष हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे जो काम करते हैं उसकी गूंज सारी दुनिया में होती है। हमारा हिंदुस्तान अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है कि केवल टेक्नीशियंस ही नहीं, हमारे यहाँ साइंटिस्ट्स, हमारे यहाँ के म्यूजिशियंस, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस से बाहर के लोग सजेशन लेते हैं, एडवाइस देते हैं, भैया बताओ हम कैसे चलाएं अपने देश को। ये हमारे मोदी जी ने ये पोजीशन लाके खड़ी कर दी। लोग आते हैं, पूछते हैं। एक हम गाना गाते हैं कभी कभी स्टेज पे कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। 2 लाइन हो जानी चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
यहाँ यही गड़बड़ी हो गई कि डाक डालकर सोने की चिड़िया, हमारे देश को सोने की चिड़िया कह दिया गया, क्योंकि ये सोने की चिड़िया थी। तो इसको मुगलों ने भी लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब लूट के दिखाओ। अब ये सोने की चिड़िया नहीं है, अब ये सोने का शेर है। अब इस शेर से लोग आते हैं, सलाह लेते हैं कि हम अपने देश को कैसे चलाएं, ये जो युद्ध हो रहा है इसको कैसे बंद करें। आप ही कर सकते हैं, ऐसे दुनिया भर के लोग कहते हैं, आप ही करा सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने देश को आज इतना प्रबल बनाया है, और अब आगे इसको और प्रबल बनाने के लिए इस क्षेत्र में we have Mr. Anmol with us. He is going to help us, he is going to show us path, he is going to give us different directions. This is the way Indian technician, every technician will go globally. He will not just work in India, he will go internationally, globally, and work in showbiz. बहुत बहुत शुक्रिया। A big shout for that all Indian cinema makers are going to go globally. आदम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा सोने की चिड़िया। मैं ये सब सारा क्रेडिट तिवारी जी को देता हूँ। तिवारी जी ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया, और अकेले इन्होंने ही मेहनत किया है कि ये प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए हैं। और जिस तरीके से अपनी यहाँ के इंडियन एसोसिएशन के लोग, हम लोग जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम करेंगे। हमारी भी प्रतिभा हॉलीवुड में भी देखी जाएगी, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी आप भी कॉपी पेस्ट करेंगे डबिंग में जैसे होता है, या फिर कुछ और बोलना चाहेंगे? सबको नमस्कार। जैसा नीता जी ने कहा कि मेरी जर्नी इंडस्ट्री में 5 साल की है, और जब से मैं फेडरेशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ 4 साल से, मैंने सिर्फ यही सोचा कि मेरे जो मेंबर हैं उनका मैं भला कैसे कर पाऊँ, चाहे वो कोरोना काल में हो चाहे अब। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे मेंबर भाई काम करें, चाहे यहाँ चाहे हॉलीवुड करें। इसलिए हम लोगों ने मिलकर ये काम करने की कोशिश की है। मैं तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा संजू भाई ने कहा कि पूरा क्रेडिट, मैंने लास्ट जनरल काउंसिल में भी कहा था कि पूरा क्रेडिट तिवारी जी का है। 2 साल से इस पर मेहनत कर रहे हैं, और मुझे 15 दिन से कह रहे हैं कि चलो हम रेनमोर से आपको मिलाते हैं। बोला तिवारी जी आप कर रहे हैं तो हम है ना आपके साथ में। तो मुझसे एक दिन नाराज भी हो गए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं बोला आप करिए, हम लोग बैंगलोर की सिपाही हैं, आपके पीछे लगे रहेंगे, जहाँ कहेंगे हम खड़े रहेंगे। पूरी एक एसोसिएशन। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, shift the next level. These are the associations who are going to be associated with LifeArt. Yeah, I believe you have made an app and everything. So yeah, they have app. I yes. think everybody register here somehow, so they will know the app, go play with these and things. But the main things, how you want to succeed without a good presentation. Right. How can I go around, or Mrs. Tiwari take all the union and show it to Germany or Hollywood or Greece or whatever, Panama, and say, hey, here's my people and this is the job. He can say it, but people, as a producer like me, I will want to go and check who is the people and what they've done. So how can you do it, like going to think, oh, I want to reach a star without a spaceship? So first of all, you need to have a spaceship. So you have to, and the spaceship is very easy. Everyone just register, create their own account, create their own present, and then we will put through group, and I'm sure they will explain it later, through group, through different organizations, so people when they search they can find it. And once we have a massive of people inside this, then we can go and present it to the rest of the world, present it to all India, to present things. If people just sit and look and decide and say, hey, I want to wait to see if what happened, they can wait. The train is going all the time. The question is, you jump on the train or you
or you don't jump on a train. The question, if it's your train, jump on it. You know, you pick it. You know, Indian, these people who are आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए नहीं है, फेडरेशन है, इसलिए टेक्नीशियन की बात होती है, मगर ही इज ए प्रोड्यूसर। रेनबो टेक्नीशियन के अलावा प्रोड्यूसर भी हैं, तो प्रोड्यूसर भी अपनी बायोडेटा उसमें डाल सकता है, उसके साथ रजिस्टर कर सकता है, उसके साथ इनके साथ ज्वाइंट हो सकता है, उसकी अपने सब्जेक्ट को उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाना, साथ में करना, मिलना, वो सबके लिए है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाइफ आर्ट ओपन है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हैं तो नहीं आ सकते इसमें, आप म्यूजिशियन हैं तो नहीं आ सकते, आप जो भी हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं वो लाइफ आर्ट के साथ जुड़ सकता है। अपना ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना बायोडाटा डालिए, अपने बारे में बताइए कि आप क्या क्या किए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट आपके टच में रहेंगे। इसलिए लाइफ आर्ट ऐप बनाया गया है कि ताकि आपकी बात डायरेक्ट इन तक पहुँचे और हमारे तक पहुँचे। तो आपके सपोर्ट में खड़ी है फेडरेशन भी और लाइफ आर्ट। Okay, sir. Thank you. Thank you. The gentleman. I asked you, I'm a filmmaker, I've got projects. I've got good projects which I would probably want to make it. I'm a writer also, so I've written projects. Now, how would life art help me in reaching my, or in executing my project? Okay, first of all, is the billion-dollar question that every filmmaker asks. You know what I mean? So it's like, I'm asking the same, and even the top Hollywood producer asks the same, how I do my next movie. But in order, when I'm getting a script, when I'm getting a project to look, then I look at the people who does the project, what they did before. You know, I want to know before even I make a meeting to see a little bit about who is the people, you know, and especially the hardest is to get the meeting. As you know, I'm sure you pick to sell it to these people and these people. So the first step in creating how you get the meeting, how you get the people behind. So this is why first of all create a platform so they have like you part of something and you not send me your Instagram page, okay? Because then I will see maybe things. Then I want to see exactly what is your last project, the one before, and the people you connect to, creativity. Not in Facebook and not on Instagram, you know, the people. So this is another few steps that when I'm getting a project, that first of all I look. Yes, I think the creativity is 50% for me. It's 50% about the project, and the other percent how you get the money guy sitting here, how you get the... No, and about who doing it and how doing it, because in the end of the day, it's a story and it's a creative. How can you decide that this story is good or not good? Nobody knows. You know, a script I all the time say it can be worth 1 rupee or $1 billion. Same script. It depends what the interaction of people. So for you, yes, we have a way of submission and everything, but I think you ask more specific questions. But they have many ways of financing it to do like this. To Europe, to, you saw the casting director from France, you know, so if you are a member, you can say, hey, you can maybe text her to the membership and say, hey, do you have anybody in Paris or something like this, if it's a European project that I would like to watch. So you basically, it's helped you to create your project much more approachable and much more things. Now, you say you're already a filmmaker, so you know, this is, everybody asks, but without to have the right network around you, and without to know how to contact, the reason that also we do it in files, so when somebody from Germany want to hire somebody like this, and he look for director, how can he find director? Facebook, Instagram, what he can do, Google director. So now we create a platform that your name can be there, and so the director for the producer from Germany maybe can hire you directly and see your latest work and say to the association, can I hire this guy? My answer? Yes, yes. So can you involve
this in other IMDb or something? IMDb? IMDb LifeArt is on IMDb. When we give award, you can check LifeArt Festival and IMDb. So you see, when we award people, we give them officially IMDb. We give them a winner or notification. So we have like, you can check on LifeArt Festival. No, I'm saying, can we compare IMDb and LifeArt on the same page? Yes, The same because page? because IMDb you need to be professional, and if you did a project, then somebody will do it. Here we give a platform for anyone, the photo professional and the one beginning. So it's more, even if I see on IMDb, and me as a producer, I look and I see somebody, okay, work in this movie, but I don't know exactly what each one did in this movie besides director and producer, and even this you don't know. Then I want to go and see what really the work, who is this person? I need to hire him, I need to work with him now 6 months, 3 years, 1 day. So then I do the other things. So this is where is the difference than IMDb. So it's not. So practically, if I practically need to register myself in LifeArt, right? Are you trying to say that? I think if you're here, you're already registered. No? Now I've registered. Now I register basically with my details, and my details will be flashing to all the users or anyone who wants to connect with anyone. Yes, and more we start and more we go and more things. This is where is, you know, when you want to buy stock, when it's in the beginning. Yes. Now if I need to hire someone, Mr. Rand. Yes. If I need to hire someone, I enter into LifeArt, and I need to connect with LifeArt or directly to the persons who are. You contact directly. We don't take agency fee. The only things now, right now, the service is free thanks to the guy who sits near you. I think that's super. That's super. But in the next 3, 4, 6 months, it's going to be okay. Also, minimum payment, because we want only professional people that care. We talk about a few very minimum payments, but from the moment you are there, you contact the people, you do with them whatever you want. We don't charge anything. We don't become things. If you needed help, this is a different story. But for this, we have. It's a little bit more complicated because you understand we do the festival in 8 different countries. So we have a lot of different filmmakers, and this is the question you ask, is every place they ask the same. So this is why we create the festival that is different than other, like a Bombay Film Festival or Berlin Film Festival or any other that is a local. This is more a global community and is more creativity, and also for today, not everybody cinema is streaming and YouTube. YouTube watching is more than any other things. So we are looking for the future where it can be. So example, if you're the most creator on YouTube and you have 1 billion watchers, you're not in IMDb. But in the end of the day, you have more people watching you, and the guy who came around, the guy who did the lighting for this YouTube, they are seen by billions of people, while a big movie of Hollywood or Bollywood say by 20 million people. You know what I mean? So this is why we think to everyone in any different department should be represented. And this is hopefully I answer. All the very best. Thanks. Thank you so much, Mr. Thank you, Shetty. Tiwari. Rest of the questions and queries can be answered outside also. Sir, very, very quickly, very short question. Very short question. And a short answer. Because we are just running out of time. Yeah, I am Kapil Gupta from Cine Musicians Association, and General Secretary there. I just want to know on a very practical model from a musician's perspective, like that may apply to all the technicians. Just from a musician's point of view, how this association, this cultural exchange, and what will be the practical model of being associated with you? Like how can we both benefit from each other? First of all, you're not associated with me. I'm behind the scene, you're associated with a group of people, and the group of people you saw before in the presentation, so leave me out of it. But you're in the organization. And for your question, we have also a music label. So usually, as you see some artists that we work for many years, we are also releasing and help them to publishing for worldwide.
Also, we do in the music level, we have some, we put CD out, like a music album about music that we license for trailer, commercial, or anything. So we put things together so can help you to see what the US Navy buy a soundtrack for their commercial, what Netflix for the biggest trailer, what music they do. So first of all, we do a lot of, you can check it online. We have, it's called, I think, LifeArt Sound. So this is it's not sellable, but it's especially made for your question. It's like, you want to be this. I cannot help you and promise you. I'm not an agent, and I'm not a manager, and I'm not a thing. The only things, I can provide you information so you can see and hear what is the music or the tune that they licensed for this trailer, what for this. And also, if you, today, different submission, if you see from the label, we do like, we have a Fauda soundtrack, we have a lot of, we publish a lot of music from a young and well-renowned, artist. Thank you so much, Mr. Ran. In short, ये हम कहना चाहेंगे कि LifeArt ने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और उस प्लेटफॉर्म में, यानी कि उस ऐप पे आप जाकर अपने आप को लॉग इन करिए, अपनी जो कला है, भले चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, या फिर फोटोग्राफ फॉर्म में हो, या फिर आपका डिटेल्स है, वो भरकर आप उस पे लॉग इन करिए, ताकि वो एक क्लिक के बटन में पूरी जितने इनकी कंट्रीज जिनके साथ इनका टाई अप है वहां तक पहुंचेगा. Be the casting director can even cast you for music, for editing, for sound, for whatever, for stunts. So जिस भी क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर एक क्लिक, बटन के एक क्लिक पर आप पहुंच सकते हैं जहां तक अभी तक हमारा टैलेंट नहीं पहुंच पाया है. राइट तिवारी जी? हाँ, यस. मैं आखिरी बात करना चाहूंगा. तिवारी जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ लास्ट, कि हम लोग एसोसिएशन के लेवल पे भी अप्रोच फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, या इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी कर सकते हैं. आपके लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है. आपका कोई भी चीज डालेंगे उसमें पूरी दुनिया में चला जाएगा, और जो आपकी चीज को लाइक करेगा वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा. उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको याद किया जाएगा, लिया जाएगा. हम सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपना टैलेंट बताने के लिए. एक प्लेटफॉर्म है लाइफ आर्ट. पर्सनल लेवल पर हम आपसे मिलकर क्या क्या करते हैं, मगर इतने लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है. अपनी चीज़ उसमें डालिए, अपनी चीज़ें बताइए, अपने टैलेंट को दिखाइए. आपको खुद ब खुद रास्ते मिलते जाएंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे जुड़ जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेहनत करनी पड़ती, एक एक आदमी के पास जाना पड़ता, मगर एक क्लिक से आप हर आदमी तक पहुंच जाएंगे. चाहे वो फाइनेंसर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, सब जगह आप जा सकते हैं. जहां तक लाइफ आर्ट का अपना पहुंच है, जहां तक फेडरेशन की पहुंच है, मतलब आपके काम करने के लिए मैक्सिमम प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप उसके साथ जुड़िए और अपने टैलेंट को उसमें डालिए. दैट्स ऑल. आपके लिए सारे रास्ते क्लियर हैं. बाकी हम तो है ही हैं इंडिया में, जब चाहे तब मिलिए, बात कीजिए. कुछ बोलूं? ये मत सोचिएगा कि आपने तुरंत लाइफ आर्ट. दोस्तों, आज जिस विषय के लिए हम यहाँ आए हैं वो विषय ये है कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल का. बेशक तिवारी जी है, अशोक भैया है, संजू भैया है, तो ये मुमकिन है, इस पर कोई शक की अधूराई की बात नहीं. लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है दोस्तों कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर हम आप आज खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म है फेडरेशन, मदर बॉडी. मैं चाहूँगा कि मदर बॉडी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए. ऐसे प्लेटफॉर्म तो हमको हजारों मिलते रहेंगे. थैंक यू, धन्यवाद. और तिवारी जी के लिए इतना ही कहूँगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है. कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है, फिर भी मुस्कुरा के मिलता है. बहुत बहुत शुक्रिया.